रेडी करना मेरी ऑडियो ले लेना मेरे से पीछे ला। अरे ऑडियो मत लगा, थोड़ा आगे बुला लो। कम फॉरवर्ड में। अरे बताइए। कैसे आप? मेरे को बिल्कुल सही बहुत ही अच्छा लगा आपको देखकर, आपसे मिलके इस ब्रांड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल खिलाड़ी भी हमारे साथ। थैंक यू। वेल, ब्रांड तो अपने आप में एक लेजेंडरी ब्रांड है। बहुत पुरानी ब्रांड है। आई थिंक 1976 इज़ व्हेन दे लॉन्च दिस, तो बहुत मुझसे भी पुरानी ब्रांड है। सो it's been around forever, and I think L'Occitane stands for luxury. I would say luxury skincare, hair care, cosmetic products. तो इसका जो positioning है वो बहुत luxurious है. At the same time, I think they also stand for quality. You know, the way they source their ingredients जो use होते हैं. It's mostly all the beautiful ingredients you find in France. I think it is a French brand. I don't think it's a French brand. So वहाँ से जो locally source करके चीज़ें होती हैं, बहुत ही sustainability की तरफ इनका बहुत importance रही है, बहुत तवज्जो रहा है. So I think overall the brand has been around forever. It has, and I think for anything and any brand and anyone to sustain over 50 years, अपने आप में एक बहुत बड़ा achievement होता है. And I think L'Occitane has managed to do that very beautifully. It almost seems like, you know, it's not. आप जब इतने सालों के लिए रहते हैं तो आप किसी से compete नहीं करते, आप अपने आप से compete करते हैं, and you want to just get better and better every year. So I think that's what L'Occitane has been doing for years, and their products are very. As I said, ingredients are they are very fresh and sourced very mindfully. At the same time, they smell amazing, they feel amazing. So, I mean, it's amazing. One quality जैसे कि यहाँ से भी देखने से, बाहर से भी देखने से बहुत ही अच्छा लगा है जी. And one quality जो आपको बहुत ही खींचती है, लेकर जाती है इस ब्रांड की तरफ. I think I would say, as I said, ingredients जो इनकी fragrances होती हैं, even in their skincare products and hair care, like you talk about, I think इनका एक almond oil का एक range है जिसमें बहुत सारे products हैं, and they are I mean, almond is, हम सब जानते हैं the qualities of almond and all of that. But मुझे एक चीज़ जो L'Occitane के बारे में बहुत अच्छी लगती है, आपको ना actually उसको use करके बहुत luxurious feel होता है, and I'm not just saying it for the sake of it. Or you smell very very well, very very good, and it's very moisturizing. I think their products are very moisturizing. The skin feels good after using them. So whatever they claim is something that I think they stand by. जब आप किसी ब्रांड से एसोसिएट होती है तब मेन 3 चीज़ जो आप देखती हैं. पैसे. No, I think what comes first for me is surely, and I think वो मेरे काम में भी reflect करता है कि मेरे लिए मैं किस ब्रांड को के बारे में से एसोसिएट कर रही हूँ. What does the brand stand for? You know, उस ब्रांड की अपनी एक इंटेग्रिटी क्या है. I think integrity is the word that really connects me to being a part of an association, you know, being collaborating with. Yeah, so I think integrity of a brand is something that I really look for whenever I'm associating. मुझे लगता है कि I mean, while we can be paid money and you know we can talk about anything and say anything about it, personally मुझे लगता है कि I should क्या मैं वो ब्रांड खुद यूज़ करती हूँ. अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे क्या उसके बारे में फील होता है. तो that integrity of the brand associated with my integrity is something that is the match I look for. Yeah, that's pretty much that. Madam, would you like to add something beautiful, gorgeous, beautiful lady जब हमारे बीच में आती हैं and come close please. Oh yeah. Yes. So, would you like to add something? नहीं, इन्होंने जो कहा ब्रांड के बारे में बिल्कुल सही कहा. It's होमवर्क अच्छा किया है ना मैंने. नहीं, होमवर्क की बात नहीं है. It's only somebody who believes in it can talk so passionately about it. So as she said, we are a French brand. We are from Provence. Our products are very beautiful.
Our ingredients, the way we source them, we've got very ethical ways of sourcing ingredients. Our ingredients are all natural. हमारा ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है, एफिकेसी होती है, उसका तो कोई डाउट है ही नहीं. जो हमारे अपार्ट फ्रॉम जस्ट द प्रोडक्ट्स, हमारे ब्रांड के और भी बड़े सारे बिलीव्स हैं. वी बिलीव इन वर्किंग सस्टेनेबली. सो हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं टू गेट दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट टू यू, all the steps we take to get it here is they're mindful, and we take the step keeping sustainability in mind, because at the end of the day we believe that we need to give back to nature. We are from Provence. We are all about naturality, the beautiful, now even the look and feel of our products is more Provençal. So we come from such a beautiful part of the world. So उसकी खूबसूरती को हम थोड़ा सा यहाँ लाते हैं, and in a very ethical and a sustainable manner. Thank you. Thank you. हाँ, जैसे कि आपका फैशन है, लोगों को काफी पसंद आता है, आइकॉनिक I hope so यार. हाँ. तो बीइंग अ गर्ल, आप ब्यूटी या फिर फैशन को क्या समझती हैं? मतलब आपके लिए ब्यूटी और फैशन क्या है? यार मेरे लिए ना फैशन इज़ कंफर्ट फॉर मी. अगर मैं किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जब आप कुछ पहनते हैं, आप जब आसपास भी देखते हैं, कोई आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है कुछ कपड़ों में, कोई आपको उन्हीं कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. सो आई थिंक यू हैव टू एंड ब्यूटी एंड फैशन, like fashion is very personal to me. It has to reflect, it has to represent who I am, not what the world wants me to be या trend क्या चल रहा है. I never follow trends, मुझे नहीं पता होता क्या चल रहा है दुनिया में. I just do my own thing. So वो एक अपना उसमें एक input आकर making it your own is something is, I believe, is what fashion for me, and I love experimenting. I am not limited to, I'm an actor, I do different roles, but even as a person, when especially I'm stepping out for any events or whatever, मुझे लगता है कि यार कुछ नया किया जाए, so that is pretty much that. Beauty for me is a combination of lot of things यार. मुझे लगता है कि अगर आप, but most important is you have to feel good about yourself. अब चाहे आप वो प्रोडक्ट से फील करें, चाहे वो अपनी आप सेल्फ वर्थ बढ़ाएं, चाहे वो आप you take care of your health and you are fit and you are feeling healthy. आप किस तरीके से फील गुड करते हैं, I think that's what eventually reflects. आप बाकी कुछ भी कर लीजिए, but how you feel inside is something which will always show on the face. So yeah. Thank you. Yeah, I don't know. Yes. But I can avoid the branding. Yeah, the 3 products that I can't, skincare products you're saying, right? I can't do without masks. When I say masks, I use some or the other mask, usually something very homemade at home. So masks is one thing. I can't do without retinol. I think retinol in my skincare is very, very important to me. And I can't do without light moisturizer, because I have a certain skin and depending on weathers it changes. So something, especially for Bombay weather, that is very light on the skin. And of course a sunscreen, which I have started to use in the last 5 years. I was tougher not to use it before, but I think these 3 products, yes. There are just 3 questions. Another one is about can I mention other things? Juicy Chemistry, I think is a brand that's really going to be very, very big. I really enjoy their skincare, hair care, plus even the cosmetic, the makeup thing that they've started called Color Chemistry. I'm very fond of Tribe Concepts. I'm very fond of this brand called Hydra by Ambika. So yes. 3 favorite cafes. In India? Yeah. God, I don't remember the names. 3 cafes. I really like, because I live in Goregaon, so in Andheri, 1 BHK is something that I really, really enjoy going to. I love the fact that they have an outside seating area and all of that. It's a very good place. And I really like cafes, because of cafes. There's a greener cafe, yes. There's a greener cafe in Bangalore which I like, and then there is
collection called The Hours, which has the whole computer chemistry and nothing in particular. So that is again nice, something I recommend. And I have also there's another show on Apple TV called Lesson in Chemistry with Brie Larson. So do watch it. All right, thank you guys, thank you. Thank you. मैम वेट वेट एक फोटो आपकी तरफ फोटो का वेट फुल मैम थोड़ा वेट मैम अरे यार थैंक यू नहीं हुआ देखता हूँ बाद में
गुड टू सी यू हेली जी। हेलो Thank हेलो। you. Hi. तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ब्रांड जब भी आप कहीं जाते हैं क्या कुछ शॉपिंग करके आप लोगों ने आज क्या कुछ कहना चाहिए? Honestly, I've always loved L'Occitane as a brand, and I mean, उनका एक नया launch था, तो we've come here and she got to try the products for the Yeah, first actually, time. I have not tried their products, but आज मैंने उनका almond scrub try किया and it was really मज़ा आया। amazing. बहुत मज़ा आया. And body care is really important. Shiny से हाथ से तो चमक रहा था, but It was nice experience. Yeah. एंड जब भी रेनी सीजन चल रहा है तो बताइए कि जब आप लोग शॉपिंग करते हैं कितना अच्छा लगता है रेनी सीजन में शॉपिंग करना? रेनी सीजन और शॉपिंग का आई डोंट थिंक कोई कोरिलेशन है, बट इन जनरल मुझे शॉपिंग अच्छी लगती है और मुझे रेनी सीजन हर सीजन में शॉपिंग अच्छी लगती है लड़कियों को. Don't ask this question क्योंकि everybody loves बट shopping. बरसात अच्छी लगती है मुझे, बरसात बड़ी अच्छी लगती है हाँ. और मैं ऑनेस्टली इरिटेट नहीं होती हूँ, चाहे फिर वो ट्रैफिक हो या फिर कीचड़ हो, मुझे अच्छा लगता है. आई लाइक इट. तो जब She भी loves driving, that's why. तो जब भी आप लोग किसी ब्रांड के साथ जुड़ते हैं या किसी ब्रांड पर शॉपिंग करते हैं जैसे आप लोग तो सबसे पहले क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया होती है रेनी सीजन? I think the quality of the products really matters to me. No matter if it's hair care, skin care, or body care. Correct. How authentic and how original the products are, like paraben free, sulfate free. That's very important. ऑल्सो for आई me. थिंक वो लोग जो क्लेम करते हैं वो होना चाहिए. Yes, वो authentic. if they're claiming something then it should feel that okay, yeah, the product is actually working, and I think with L'Occitane it's always worked that way, and it's a really nice brand. My mother's always loved using their products, and मम्मी खुश हो जाएगी कुछ products देखकर. जैसे कि ब्यूटी ब्रांड है तो आपके लिए फैशन और ब्यूटी क्या होता है? Fashion and beauty, we are actors. In fact, for all girls nowadays, beauty and getting ready is a must thing for our It's like a daily therapy. life. Honestly, Yeah. for me, getting ready is like a therapy, and at times I don't feel like getting ready, then I won't get ready. But कई बार if I'm in the mood of really going all out, then I will do that. So it's just a part of my self care, if that makes sense. मेरे लिए वो एक therapy जैसा है, and I enjoy doing that. देन आपका जो अभी प्रोजेक्ट आया था गुल्लक, काफी प्यार मिला उसको, और आप आगे क्या कुछ अपकमिंग आने वाला है? जैसे ही आएगा मैं बताऊंगी आपको जल्द. Thank you.